Hello, guys. Welcome back to yet another episode of Pods and Beyonds, a formal informal conversation and a social learning platform brought to you by me and my team. We today have Ali Saif Samo, who is a well-known name in the industry, is a senior brand manager at Bank Alfalah right now, and has been in the industry since last 15 years working with UBL, HBL, Bank Alfalah, GeoTV, and a lot of different brands. बहुत सारी कैंपेन्स की उन्होंने स्पेशली इन द बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोग जितनी भी कैंपेन्स देखते हुए आ रहे हैं फॉर ऑल दीज डिफरेंट ब्रांड्स including PSL was done by and he was much involved in um, the campaigns for the same. So let's call him and quickly start the discussion with him on how and what was his journey and how did he become what he became. अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नीलम, आप कैसी हैं? I'm good. Yeah, I've been working with you since last 2 years, and the amount of accomplishments you have and the amount of interest you have apart from your work life as well is very fascinating for everyone. It's ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है. I have many people I know in the industry who have done pretty well than what I have done. I just tried everything possible. People actually are scared to take risks और हर कोई outcome से बहुत डरता है. तो in my approach has never been कि मुझे किसी चीज से डर लगता है तो मैं शायद ये ना करूं. I did 1-year diploma in information technology also, but मेरा करियर आप देख लें कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ. So मैंने सब चीजें ट्राई की और हिट एंड ट्रायल करते 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 eventually I ended up where I am right now. और it took me like good 7-8 years to realize what I'm good at. And क्योंकि होता ये है कि until unless you don't have a good mentor or a session or somebody to guide you, so you would want to try everything possible in life. और यही मैंने भी किया क्योंकि my father, I came from a military background, so my father was not very well versed with the corporate world or the job industry, what goes in, what comes out, what is the right thing to do in the industry. कि जी naturally अगर मैं फौज में नहीं जा रहा तो he would have guided me the best कि जी फौज में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए. लेकिन in this competitive market when I was entering, so he had no clue. So I was just asking this guy, asking that guy. कोई IT में चला गया, उसने कहा यार IT इस वक्त जोरों पे चल रही है तो मैंने IT में शुरू काम कर दिया. जब मैंने बैचलर स्टार्ट किया उस जमाने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज एट टॉप. एवरीबॉडी वाज डूइंग, ऑल द यूनिवर्सिटीज वर promoting HRM. So मैंने मेजर्स अपने MBA में भी HR में शुरू कर दिए. During that course of time, क्योंकि I was studying also and working, and I ended up working, started my career from the media industry, and apparently it was the largest media house in Pakistan at that point in time. So उधर काम करते करते I realized that I had different capabilities that I was not aware of, that people introduced them to me. That किसी चीज में जब आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप वो काम करना शुरू कर देते हैं, and that's your judgment. Let other people tell you कि this is where you're good at, this is where you're not, because मैं शायद क्लिक नहीं कर रहा हूँ जिधर मैं समझ आता. And eventually people made me realize where I was good at, and I started approaching that field, and that was marketing and creativity and everything. Because then क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा मेंटोर भी नहीं था, so मुझे जो मिलता था मैं उससे गाइडेंस ले रहा था. And eventually when I met few people and they made me realize what I was good at, I started pursuing that area, and that was to do with product development, brand management, marketing, and बहुत initial stage पे. And eventually जब media field से मुझे एक बहुत ही अच्छा experience मिला, then also I realized at one point in time that I need to switch my career and go into the corporate world, because media industry is a very it's a very open industry. But in the corporate side, when you're pursuing a career जहाँ पे all these tie suit वाले बहुत ही corporate world वाले होते हैं, as you know. So वहाँ पे दुनिया और है. So one of my bosses, I still give him credit. One day he told me, यार अली तुम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो.
and it clicked me. And then I got an opportunity to work with UBL, start my career. उधर से जब मैंने UBL से start किया, तो for me it was starting from scratch again, क्योंकि banking industry थी, उनके लिए media का experience was not very fruitful, so I ended up going into product side. मैंने 2 साल product में काम किया, फिर वही चीज हुई कि I was doing something that I was not good at. So फिर Really? one of You were not good at product development as well, or you didn't have the मैंने experience, business right side, experience for that? Okay. business side. सही So है. business side, I worked as the product manager, assistant product manager for credit cards for like good 1 year. और उसके बाद फिर मैं acquiring side पे चला गया, उधर भी काम किया. लेकिन फिर यही हुआ कि one of the one of my bosses from marketing came up and asked me if you would want to try and working for me in the marketing. So I said okay, I will try that. उन्होंने मुझे internal transfer कराया, marketing में काम शुरू कर दिया, and then it clicked. I started working. उधर मेरा काम recognize होना शुरू हो गया, नजर आना शुरू हो गया कि अली सैफ ने किया, अली सैफ ने किया. Then I realized okay, this is what I'm good at. And then फिर eventually after working 4.5 years with UBL, उधर बहुत सारे मैंने projects किए, and I got a very good learning experience there. वहाँ से I ended up at HBL. It was a very good opportunity. और HBL में भी one of the largest banks in Pakistan. I also got very big projects to work. And when I say big projects, so सबसे बड़ा project ही मेरा PSL था, Yes. जिसकी core team में मुझे शामिल किया गया, and I got the credit of doing the first 3 PSLs. My boss was leading the whole project, and I was working with her. So उधर मुझे बहुत exposure मिला. I understood the whole dynamics. So in and out, पूरे agreement से लेके everything, each and everything मुझे समझ आ रही थी, and I learned a lot. And वहाँ पे 4.5 साल काम करने के बाद फिर one of my ex friends, colleague, and a senior resource, he had moved to Alfalah. So he called me one day and was like, यार मेरे पास आएगा? मैंने कहा, are you giving me a job? मैंने कहा हाँ. तो मैंने कहा कि ठीक है, I knew the guy, and I was very comfortable. So मैंने फिर accept कर लिया, and he offered me the job. मैं चला गया अल्फला, और अब अल्फला में जब से हूँ almost 3.5 years. I've worked with you since that time also. So it's an amazing place, and I'm enjoying my time. I've got too many big projects on my name, and I got a lot of opportunities, open hand, to work as and when I wished, the way I wanted to. So ये brief सा intro था. So tell me something. So आपका experience, I understand that it has come through a lot of different things, and you said because you didn't have a mentor, so that took a while for you to realize what you want to do. So do you think this is very important for the young kids right now? Because everyone does not know what they want from their life, and they don't have the avenues available जो है वो उसको lead कर सके, जो कि guide कर सके हमारे students को, and everyone in the industry as well. I think a lot of people work in an industry for 3-4 years, but then they're still not sure कि उनको करना क्या है जिंदगी में, So do you think those kind of avenues, if you had it earlier, that would have helped you somehow to reach your goal faster? Or do you think कि जो life के experiences ही है वही are the best mentor for you? देखिए, पोइट्री में अगर मैं बात करूं तो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर मुझे शायद बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी पता चल जाती, गाइड हो जाती, I wouldn't have wasted a lot of time, and I would have reached certain goals in my life. I would have realized, at least 5-6 years earlier from where I am right now. As a young blood, जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं या कॉलेजेस से निकल रहे होते हैं, इंस्पिरेशन उनकी बहुत जल्दी डेवलप होती है. हर किसी का एक मेंटोर उसके अपनी जिंदगी में बन जाता है, वो खुद बनाता है, और वो इस तरह बनाता है कि उसकी फैमिली में या कजन्स में या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई एक एल्डर होता है जिसको वो एस्पायर करता है कि वो अच्छा, वो यूनिफॉर्म में है, वो सूट में है, ही लुक्स गुड, ही टॉक्स वेल, ही हर किसी के अपने मेजर्स होते हैं. उन मेजर्स पे वो इंस्पायर होना शुरू हो जाता है. उसने नई गाड़ी ले ली, उसके पैसे बढ़ गए. तो एज अ यंग
boy or a girl, you start getting inspired. और वो इंस्पिरेशन आपकी पैसा हो सकती है, वो इंस्पिरेशन आपकी सक्सेस हो सकती है, और वो इंस्पिरेशन आपकी कुछ भी हो सकती है एज अ यंगस्टर. लेकिन होता ये है कि वो जो उसका सक्सेस उसको मिला था, वो उसके कुछ डिसीजंस की वजह से मिला होगा जो उसकी लाइफ में उसने लिए हैं. अगर आपको राइट गाइडेंस मिल जाए उस वक्त, एंड यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर गुड एट. सो मैं अपनी वाइफ से भी ये बात करता हूँ कि लाइक देयर लाइक 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, which parent wouldn't want their child to top the class? Every parent. लेकिन उस क्लास में टॉप कौन करता है? एक बच्चा. वो एक बच्चा क्योंकि टॉप इसलिए करता है क्योंकि वो एक ही बच्चा होता है जो कि आउट ऑफ 30 is the best in that. वो एक बच्चा टॉप कर जाएगा. बाकी 29 क्यों नहीं टॉप करते? क्योंकि बाकी 29 वो रेस्ट ऑफ दी 29 चीजों में टॉप करेंगे. Makes sense. लाइक मैंने कभी टॉप नहीं किया अपनी क्लास में, लेकिन मैं तस्वीरें बनाता था. मेरी पूरी क्लास में मेरे से बेहतर कोई तस्वीरें नहीं बनाता था, तो आई वॉज ऑन टॉप ऑफ माई क्लास. ठीक है. और अगर शायद उस वक्त मुझे रियलाइज हो जाता तो मैं शायद आज एक आर्टिस्ट भी होता. ठीक है. इसी तरह एवरी पेरेंट और एवरी एल्डर शुड रियलाइज कि जी उसकी बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. लेट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग दैट आई गेट इंस्पायर्ड ऑफ, और मैं इन चीजों से आई गेट अफेक्टेड कि जी लोग क्या कहेंगे, फलाने का बच्चा, या फिर मैं Where बाहर will we जाऊंगा तो get मेरे the से. most money out of it, or where will they get the most famous? Yes, so all these things detract you. Interesting. So मुझे बताएं कि you belong to an army family, going back to that, and you wanted to go to army as well. You were very passionate about that. So when you were not able to, how did you actually get out of that zone? के मतलब every kid has thought कि अच्छा मुझे ये करना है, and then जब आपका वो वाली चीज होती है कि वो आप नहीं कर पाते, or there are reasons, there are problems in life, or something else happens and you're not able to do what you thought you're going to do, how do you change your path? How do you grow out of that? Because at times people get depressed, unka ek zone hota hai कि I'm always gonna be studying in that particular university, and if they don't go into that university, they are like, I've seen this a lot in this kids these days as well, and everyone around us, okay, if you don't do what you had always thought to, you don't have a plan B, you do not get out of that zone, or it takes you a lot of time to get out of that zone. So how did you tackle that phase of your life? Actually life taught me, and क्योंकि हर डिसीजन और हर गाइडेंस मैं खुद से ले रहा था, खुद से इट एंड ट्रायल कर रहा था. Life teaches you lessons, sometimes in a hard way and sometimes in a very comfortable way जो आपको पता भी नहीं होता और आपको समझ आ जाती है चीजें. So I learned it the hard way. I was really passionate to go in the armed forces. I applied and I did not get selected, amazingly. Actually, as I spoke about my father, कि वो, he wouldn't say a word Wasn't on this, happy about it? and he didn't even know, because he wasn't. He was like, he wanted me to do something. मैं जाऊं जरा tie suit पहन के कोई नौकरी शौकरी करूंगा. He said, I have seen the life in the armed forces. I've done it, been there, done that. You better do something. So I didn't inform him कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ. And my mother, when I left, they had to go for a test. 5 दिन का टेस्ट होता है जिसको हम लोग ISSB कहते हैं. तो मैं ISSB के लिए गया, तो उस वक्त मेरे जाने के बाद मेरी वालदा ने मेरे वाले साहब को बताया कि he has left. And then he said कि इसका हो जाएगा, because he knew my passion, my physique, and I was very active, physically fit. लेकिन फौज में फिजिकली फिटनेस तो एक बेसिक बहुत ही बेयर मिनिमम क्राइटेरिया होता है, क्योंकि वो फिजिकली फिट तो आपको वो लोग बनाते हैं, उनको मेंटल अप्रोच चाहिए होती है, और क्या होता है, और बहुत सारी चीजें डायमेंशंस होती हैं जो कि शायद आई वुड नो कि मुझे किस वजह से उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया. फिर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, यार तुम अपने बेटे को ये करा दो, वो फलाना कहता है अपने बेटे को ये करा दो. 18 लोगों ने 18 चीजें बोली, और मैं इवेंचुअली IT में डिप्लोमा करना शुरू हो गया. सो द फेलियर डिडंट हिंडर माय पैशन for the armed forces. I still love them. I love the institution. I aspire the way they work and everything. And लेकिन हुआ ये फायदा ये हुआ कि मैं उधर नहीं गया, तो I had to try something else.
वो चीज नहीं हुई, आई हैड टू ट्राई समथिंग एल्स। तो हिट एंड ट्रायल में करते करते आई डेवलप्ड अ लर्निंग ओवर टाइम एंड एंडेड अप डूइंग समथिंग। लेकिन अगर शायद उस वक्त मुझे बेहतर गाइडेंस मिल जाती फौज में जाने की भी, तो हो सकता है मैं फौज में भी सही जाके बातें कर देता, मुझे सिलेक्ट कर लेते। अगर उस वक्त मुझे फौज में ना जाने के बाद कोई बता देता कि बेटा इस वक्त डिप्लोमा आईटी ना करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 साल तुम अभी से ये चीज शुरू कर दो, तो शायद मेरा वो साल भी वेस्ट ना होता। और अगर मुझे मेरा मास्टर स्टार्ट करने से पहले कोई बता देता कि यूर गुड एट ब्रांड एंड मार्केटिंग, सो मैं मेजर्स अपने उसी में कर लेता। और ऑल दीज थिंग्स मैटर इन योर लाइफ, एंड देन आपका जो टाइमलाइन है वो बढ़ता जाता है। सो अभी जितने लोगों से भी मैं मिलता हूँ उनसे मैं ये कहता हूँ कि इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन आपको वो रियलाइजेशन जरूरी है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। हर कोई मार्केटियर नहीं है, हर कोई क्रिएटिव नहीं है, लेकिन कोई लॉयर अच्छा हो सकता है, कोई मैथमेटिशियन अच्छा हो सकता है, कोई फिक्शनल थिंकर अच्छा हो सकता है, कोई राइटर अच्छा हो सकता है। हम लोग बहुत पैशनेट होते हैं हर चीज के लिए, और सडनली एक रोड ब्लॉक आता है ना, तो यू से कि जी मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं खत्म हुई। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब 2000 में मैंने स्टार्टेड, और आज 2022 है, सो 22 साल गुजर गए, मुझे तो पता नहीं चला, Doing जिंदगी अभी तक something. खत्म नहीं हुई। मेरे बहुत फेलियर्स बीच में आए, and those failures only taught me something rather than it finished my career or something. It opened the door. आपको सिर्फ 5-6 महीने साल शायद वेट करना पड़े, okay, give it a try, लेकिन the failure should not affect anybody. Interesting. So just coming out from the discussion which we were having here, यार मुझे बताएं, you're saying that everybody should understand कि उनकी कौन सी skill है या कौन सा वो path है which they should take. Do you have any suggestions for the kids which are coming right now, or the parents or the teachers, mentors, कि how should I actually get to know कि मेरी strength है किधर? Like I understand that schools have gone towards experiential learning now, so that you can learn more about what things you are good in. But apart from all those things, what do you think should a person start working on? Should they start working on different hard skills during their schooling, and all the even after schooling, even if you are working in industry, should you start working on the hard skills, या फिर जो है वो आपको स्टार्टिंग से ही जो है वो डिफरेंट मेंटोरशिप सेशंस लेना शुरू करना चाहिए, so that you can get to a ground where you understand what you want to do when you are at that point? What would be your few suggestions, because you have been through all those things as well? तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी स्किल सेट या आपका टैलेंट एक्सप्लोर करने वाला जो पर्सनालिटी है वो माँ है। लेकिन जिस द वे वी आर ग्रोइंग अप और जिस सिस्टम में हम लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम में बैठे हुए, वो शायद उन पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को अलाउ नहीं करता कि जी हम अपने बच्चे की वो स्किल सेट को एक्सप्लोर करवाएं, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो इतना प्रेशर डालता है माँ बाप के ऊपर कि फलाने का बच्चा ये कर रहा है, फलाने का बच्चा ये कर रहा है, एंड वो सारे जो फलाने 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 हैं, उन बच्चों के चक्करों में अपने बच्चे का जो टैलेंट है वो चला जाता है किसी और जगह। तो वो होता है शायद बहुत बड़ा पोएट है, राइटर है, और वो काम कर रहा होता है किसी मिल के अंदर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रहा होता है। आपके पास सेशंस यूनिवर्सिटीज में डाला हुआ है, एंड देन मेनी स्कूल्स आर नॉट इवन पुशिंग फॉर ग्रेड्स। अब तो वो जीपीएस की बात भी नहीं करते, और वो ये भी नहीं कहते कि जी पोजीशंस होंगी। सो दिस इज अ गुड अप्रोच, एंड आई वुड सपोर्ट इट कि जी कोई ना पोजीशंस होनी चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन आर नॉट सपोज्ड टू कम्पीट। मैं अपने बच्चे को स्कूल कंपटीशन के लिए नहीं भेजता कि जी उसको जीतना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है। So this is what the approach should be, that I don't have to, win. Actually, if you win, somebody has to lose. So I don't have to make you lose. I just have to be the best. That's it. But the best for whatever I do, whatever I love, I just have to do that. तो वो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज अब स्कूल्स ने भी स्टार्ट कर दी हैं, यूनिवर्सिटीज भी सेशंस कराती हैं। और यूनिवर्सिटीज में तो अब ये होता है कि मेंटोरिंग सेशंस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं, वो बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, एंड दे देयर यू डोंट नीड टू गेट इंस्पायर्ड कि जी वो ये क्या कर रहा है। यू नीड टू चेक, क्रॉस चेक योर स्किल सेट विद व्हाट दे आर डूइंग, कि डज इट मैच,
क्या ये मैं चीज कर सकता हूँ? अगर लेट्स से कोई फाइनेंशियल का बंदा आया हुआ है और वो आपसे बात करता है एंड you're good in financials, then you need to check, talk to people, go to KG, this is what I'm good at, should I pursue this career? So everybody needs to get engagement sessions करें, content रखा हुआ है, there are techniques to judge your own skill set, what you're good at. अब तो analysis भी आ गए online, everything is available, इतनी information कि you don't now need a mentor to guide you. Just open the internet, test yourself, and you're good to go. Rest is all up to you how you do it. Okay. But from your experience of marketing specifically, and because you just said that everybody is going into the marketing, though marketing has, I think, we being into the industry, we know that it's not just marketing. It has 20 to 25 different genres which you work on, coming from negotiation to PR to handling the talents to creatives to product key basics and all those different things. So what are a couple of things which you have done, and if you can actually give a small rundown to our audience so that if they are planning to go into that arena of marketing, they know कि क्या क्या चीजें हैं जिस पे किस किस तरीके से आपका skill set बैठता है. Like if you're good with people, probably you will be good with managing the talent as well for your client, which you do, right? देखिए, मार्केटिंग जितनी फ्लैशी बाहर से लगती है, मतलब वो एक होर्डिंग या एक एड जितना बाहर से फ्लैशी लगता है, या वो एक पर्टिकुलर शूट जो कि सबको बड़ी फैसिनेट करती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट है, उसके पीछे महीनों की एफर्ट है, और वो जो महीनों की एफर्ट है वो लिटरली बहुत सारे लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन करती है. उसके पीछे फाइनेंशियल्स हैं, उसके पीछे पीपल मैनेजमेंट है, उसके पीछे डांटे हैं, उसके पीछे नर्वस ब्रेकडाउन्स हैं, उसके पीछे आपकी रातें काली हैं, उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट है, उसके पीछे मल्टीपल राउंड्स हैं. आपको तो पता ही होगा कि ये आपने किया और हमने उस प्रॉपर चीज को चलाया और सडनली कहा कि नहीं, दोबारा से लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वी वांट टू डू दिस. I'm trying to get this information from all the marketers, and I've asked you earlier as well. So there is a concept that, so basically there's a concept that you either create something which is for the audience, or as a marketer, it's your responsibility to grow the audience. You create something which grows them overall. So right now, जैसे हमारे बहुत ज़्यादा discussions चल रही होती हैं इस बारे में कि एक ऑडियंस है जिसके लिए हमने ये एड क्रिएट की है, which doesn't resonate with the top 5% of the marketers which are sitting there and criticizing, but probably that ad works, or that campaign works for those people who we are trying to target, right? And it is achieving all the objectives and KPIs and everything, and it's getting you sales, it's getting you the awareness which you need. But isn't, as a marketer, isn't your responsibility somehow that you overall grow that audience and you grow that perspective overall in the market as well? So what do you think should be the right balance about it? फिलॉसफी तो यही कहती है कि जी जो आपकी कैपेबिलिटी है, मार्केटिंग भी कहता है ग्रो द ऑडियंस. आपको पता है ऑडियंस कितने अरसे में ग्रो होती है? मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ. एक पर्टिकुलर ऑडियंस का बिहेवियर चेंज करने में कितना टाइम लगता है? और जितने टाइम में एज अ मार्केटर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, ओके, 5-10 साल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाती हैं. मैं भी एज अ मार्केटर एंड एज एन एम्प्लॉय बात करता हूँ. But slowly and gradually, wouldn't you be able to grow them? Yes. Provided I am doing the same kind of product line, same kind of campaign, same kind of industry. आज मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, कल मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में हूँ. आई एम टॉकिंग टू 2 डिफरेंट ऑडियंसेस. लेट्स से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर ऑडियंस डेवलप कर रहा था. लेट्स से अनबैंक्ड पॉपुलेशन को मैं डेवलप कर रहा था, एंड आई इवेंचुअली एंड अप इन एफएमसीजी इंडस्ट्री. सो मेरा तो so now in the reality base, क्योंकि नेचुरली सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल्स अपनी कैंपेन्स के ऊपर काम करते हैं, और they are under pressure of targets, they are under pressure of their
whole system of the organization, which naturally spends money to earn sales. And that क्योंकि हर organization फी सबीलिल्लाह तो चल नहीं रही है, naturally कमाने के लिए चलते हैं, कमाने के लिए हम लोग जो है वो सेल्स करते हैं. सेल्स किस तरह होती है? जब उसकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के पीछे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सप्लाई चेन होती है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है. तो उस मार्केटिंग को करने के लिए या तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर सेल्स टारगेट एक साल में अचीव करना है, तो अब मैं एक के अंदर तो ऑडियंस ग्रो नहीं कर सकता. सो आई एग्जैक्टली नीड टू नो कि जी वो ऑडियंस चाहती क्या है, कब चाहती है और कैसे चाहती है. नेचुरली जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है मार्केट में, तो उसके पीछे एक रिसर्च होती है जो कि बिजनेस टीम ऑलरेडी बहुत एक्सटेंसिवली उसको लॉन्च करने से पहले इन्वॉल्व हो जाती है. जब हमने उसको लॉन्च करना होता है प्रोडक्ट में एज मार्केटिंग या ब्रांड, तो हम लोगों ने उसकी टाइमिंग्स देखनी होती है, हमने उसकी टीजी देखनी होती है, हमने देखना होता है कि किसको कब कैसे दिखाना है. सो अब वो कन्वेंशनल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, बीटीएल हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, डिफरेंट क्रिएटिव एग्जीक्यूशंस हो, आप और मैं बात कर रहे हैं, आप और मैं की जगह आप और 50 लोग बात कर रहे हैं. सो डिफरेंट एग्जीक्यूशंस. सो देयर आर टू अप्रोचेस राइट नाउ. जो एक चीज आपने बोली कि ग्रो द ऑडियंस, इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड टू एक्सप्लोर व्हाट यू आर गुड एट इज लाइक डेवलप द ऑडियंस. और हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस डू इट, कि इट्स अ वेरी गुड थिंग टू ग्रो द ऑडियंस. लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज. और नेचुरली ऐसा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कोई काम नहीं होगा. पाकिस्तान में इस वक्त जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूँ, वी वर्क ऑन दैट एज मार्केटियर्स, क्योंकि स्टेट लेवल के ऊपर फाइनेंशियल इंक्लूजन के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत काम हो रहा है. और फाइनेंशियल इंक्लूजन यही है कि जो अनबैंक पॉपुलेशन है, जो इस वक्त फाइनेंशियल टूल्स को डिजिटली यूज नहीं करती, उनको यूज कराना है. So naturally, this is where we come in to convince them, to let them know how fruitful the banking would be for them digitally. तो हम लोग उनको facilities provide करने के लिए actually business teams develop the whole platform, and we as marketers will prepare and brand it and communicate it to the right audience where they need to hear it. So ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं कर रहे, हम लोग करते हैं. On a bigger scale we do it. लेकिन अगर मैं आपको स्मॉलर स्केल की बात करूं, तो वो क्योंकि उसका टाइम शॉर्ट होता है, तो उसके अंदर ऑडियंस ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता सेल्स टारगेट्स की वजह से. लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जी अनबैंक पॉपुलेशन के ऊपर अक्रॉस द इंडस्ट्री काम हो रहा है, तो एवरी बैंक इज वर्किंग ऑन द सेम लाइंस, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग इन, डू द फाइनेंशियल इंक्लूजन, चाहे विमेन सेक्टर हो, चाहे रूरल सेक्टर हो. All the sectors that are unbanked right now are being financially, included in the whole system. Uh, and this is fruitful for the government, economy, and the people also. You have been in the market when conventional marketing was the king. And then down the line, in last 10 years or something, or 5 years, digital marketing has grown and taken the budget from the conventional side. Though in Pakistan, it's still not very big right now. अभी भी हम TV पे, radio पे, print पे बहुत ज़्यादा जो है वो spend कर रहे होते हैं. But what is your thought process on how has digital grown, and do you think that it is going to take over the market overall like it has been in Western countries? या फिर जो है वो conventional will always be very strong in Pakistan? What do you think is the main difference in the marketing style there as well? नहीं, it will grow out. देखें, I have seen different age groups or different ages. आप you were using the right word. और वो ages मैं इसलिए कहूँगा कि वो different technologies के different usage थे जो कि मेरे सामने शुरू तो खैर नहीं हुए, मतलब I was growing through them and they expired, और उसके बाद उसका यूज नहीं था. इसी तरह जब डिजिटल का ये डोमेन ओपन हुआ, इनिशियली इट वाज प्रीडोमिनेटली ऑन लैपटॉप्स एंड सिस्टम्स, एंड ये चीज जब मोबाइल फोन्स में ट्रांसफर होना शुरू हो गई, एंड इट वाज इजियर एक्सेस फॉर एवरीवन
क्योंकि हर बंदा अपना कंप्यूटर उठा के तो नहीं लेके जा सकता, तो जिसने एक्सेस करना होता था ऑर्कट या फिर जो हमारा वो MSN होता था और हॉटमेल्स और सारी ये चीजें थी, वो सारे एक्सेस के लिए तो उसे कंप्यूटर चाहिए था। अब जब वो मोबाइल में ट्रांसफर हो गए सारे, और फेसबुक आ गया और व्हाट्सएप आ गया और इंटरनेट बैंकिंग आ गई, तो उसका वो कन्वीनियंस में मास ऑडियंस बढ़ गई, आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस की रीच बढ़ गई ना। अब मैं तो ये वाला लैपटॉप उठा के तो नहीं बाहर जाऊंगा, आई कैन डू दिस मीटिंग ऑन माई फोन ऑल्सो, सो माई कन्वीनियंस हैज इंक्रीज्ड। तो जो एवेन्यू ओपन होना शुरू हो गई, तो एडवर्टाइजिंग भी, जो पैसा तो उतना ही है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जहां पहले 100 रुपए सिर्फ इधर लगता था, अब शायद 70 रुपए इधर लग रहा है, 30 रुपए इधर जा रहा है। डिजिटल में, इवन डिजिटल में बहुत सारी चीजें थी जो कि आई और चली गई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए और चले गए, और ये भी हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है। सडनली एक एडवर्टाइजिंग एक जगह चल रही थी, पहले पता चलता था सिर्फ फेसबुक पे और यूट्यूब पे करते थे, टिकटॉक भी आ गया, तो फेसबुक का शेयर अब टिकटॉक पे भी जा रहा है, वो शेयर यूट्यूब पे भी जा रहा है। सो मेरे पास तो 100 रुपए थे, अब वो 100 रुपए, पहले मैं अगर 100 रुपए सिर्फ फेसबुक को दे रहा था, अब मैं वो 100 रुपए, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं 100 रुपए कहता हूँ मेरे यूट्यूब पे भी लगाओ, 100 रुपए में से मैं कहता हूँ टिकटॉक, फिर मुझे आप कहती हैं कि वो देखें, फिर ये नहीं मिलेगा, वो देखें। तो ऐसा नहीं कि जी देयर इज एन एंड टू द वर्ल्ड, एवेन्यूज ओपन, अपॉर्चुनिटीज ओपन, और हो सकता है इन द नेक्स्ट 20 years बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हों जहां पे शायद कन्वेंशनल की जरूरत ना पड़े, या हो सकता है कन्वेंशनल खुद उस टेंजेंट पे इंप्रूव हो जाएगा जहां पे उसकी बीइंग रिलेटेबल इन द मार्केट रिमेन्स देयर। One line for the youngsters out there who are watching Ali Saif Samo right now. One advice, one line. Yeah, what I have applied for myself also, और मैं सबको बोलता हूँ कि अपने करियर को, अपनी नौकरी को प्लीज सर पे नहीं चढ़ाए, डोंट गेट डिप्रेस्ड, थिंग्स विल वर्क आउट, डोंट गेट इमोशनल, लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय थिंग्स, ट्राई टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली, हर चीज को नेगेटिव ना सोचा करें, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरे 22 साल कैसे गुजर गए जब से मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ था, मुझे नहीं पता, और आई स्टिल लुक बैक एंड कि यार मैं शायद ये चीज कर लेता। सो इफ यू हैव टाइम, डू इट, डोंट वेस्ट टाइम कि जी मैं 8-9 घंटे नौकरी करूंगा क्योंकि मैंने 50 साल में जाके ये बनना है। 50 साल आप में से किसी ने नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे। तो जो आपके पास टाइम है, प्लीज हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ, do not take it too hard, do not take it, do not get depressed, take things positively, life will work out for you. So this is my last line. Thank you, Ali. Thank you so much for taking out time today. It was a pleasure talking to you. I'm sure the audience would have learned a lot from your experience and all the advices which you had for us today. Thank you. Guys, follow us. We have a lot of different podcasts from different industry experts coming in, and a lot of learnings for you, which would help you decide on your path and your skills. Thank you.